Hello everyone, welcome to my YouTube channel JEE NEET. So today I'm going to start a complete series for physics which is helpful for those students which are right now in class 11 and those who are preparing for the JEE and NEET exam. Okay, that means competitive exam. So these complete series will be in the mixture of Hindi and English so that each and every student will be comfortable. Okay. So today I'm going to start the first chapter of the physics, which is nothing but units and measurement. Units and measurements. Units and measurements. Okay, so in units and measurement, the first term is there, which is called as a physical quantity. Physical quantity. Physical quantity. What is this physical quantity? Physical quantity वो quantity है जिसको हम measure कर सकते हैं. Okay, those quantity which can be measurable. Those quantity which can be measured. Which can be measured. Okay, for example, जैसे कि length, weight or time. So you can see this figure. The first figure you can see here, we are measuring the length, or we can say that measuring the height. The second one, we are dealing with the weights, and the third one will be nothing but respective to the time. So physical quantities वो quantity है जिनको measure किया जा सकता है, जैसे कि length, weight और time. ये फिजिकल क्वांटिटीज क्लासिफाइड होती हैं दो पीस पे. पहला है बेस्ड ऑन द डायरेक्शन एंड द सेकंड वन इज बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी. सो दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर classified based on the direction. अगेन इनको दो में क्लासिफाई किया गया है. पहला है स्केलर एंड अनदर इज वेक्टर. सिमिलरली physical quantity again classified based on the dependency. Based on the dependency. So it is classified as fundamental physical quantity, fundamental physical quantity, physical quantity. दूसरा है derived physical quantity, physical quantity, physical quantity. Okay, fundamental physical quantity क्या है? जो कि इंडिपेंडेंट है किसी और फिजिकल क्वांटिटी में, उसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. व्हाट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी? जो कि एक दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है. फॉर एग्जांपल स्पीड. स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. सो डिस्टेंस और टाइम जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वेयर स्पीड इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. सो स्पीड दो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है. सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? Fundamental physical quantities which are independent on other physical quantity, other physical quantity, other physical quantity. Okay, so there are these 7 fundamental physical quantities are there, जैसे कि length, mass, time, electric current, temperature, amount of substance and
luminous intensity. Okay. These 7 fundamental physical quantities units are, for example, length के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर किया जाता है, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाता है, amount of substance can be measured in mole, and the luminous intensity will be in candela. Okay. So there are some particular symbol which will be used for these quantities. जैसे कि मीटर के लिए m symbol यूज करते हैं, for kilogram it will be kg, सेकेंड के लिए s, एम्पियर के लिए a, केल्विन के लिए k, and mole mol, and candela will be cd. Okay. Okay, so these are the 7 fundamental physical quantity. So let's move to the next one, which is nothing but the derived physical quantity. जैसा कि मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया, स्पीड क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए उसकी यूनिट जो होगी वो होगी मीटर, और पर यूनिट टाइम मींस सेकेंड। सो दीज टू आर फंडामेंटल क्वांटिटी। फ्रॉम दिस फंडामेंटल क्वांटिटी किसी से एक अदर फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव किया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल quantity. So derived physical quantity, those quantity which are dependent on other physical quantity, or we can say that fundamental quantity. Physical quantity. जैसे कि speed is equal to distance per unit time. डिस्टेंस और टाइम के लिए जो फंडामेंटल यूनिट है वो है मीटर एंड सेकेंड। दैट्स व्हाई दीज आर टू नथिंग बट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल quantity. From these two fundamental physical quantity, the other physical quantity which is derived, that's why this is called as a derived physical quantity. Second example, velocity. Velocity क्या है, रेशियो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। डिस्प्लेसमेंट मीटर, टाइम सेकेंड। ओके, ये दोनों भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इन दोनों के रेशियो से एक थर्ड क्वांटिटी डिराइव्ड हुई जिसे बोलते हैं वेलोसिटी। थर्ड एग्जांपल, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो कि सेकंड पॉइंट में हमने डिस्क्राइब किया। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम की हो गई सेकेंड। दैट मींस वेलोसिटी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो कि दो फंडामेंटल क्वांटिटी के रेशियो से मिलकर बनी। Similarly, the acceleration is also derived from velocity and time. So acceleration is also derived from the physical fundamental quantity. उसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्थ वन, डेंसिटी। डेंसिटी जो है वो है रेशियो है मास और वॉल्यूम का। मास की यूनिट होती है केजी और वॉल्यूम मीटर क्यूब। लेंथ, विड्थ एंड हाइट
उन सबको मेजर किया जाता है मीटर यूनिट में ही। ओके, so kg per meter cube is the unit of density. So all these four are nothing but the derived physical quantity. Now the next thing which come into our mind, how to measure a physical quantity. So the next thing is how to measure a physical quantity. Physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमको उसको कंपेयर करना पड़ेगा किसी रेफरेंस से। ओके, सो टू डू दिस we have to compare with some reference, which is called a unit, okay. So these are the two images you can see here. In the olden times, what they will do, people used to measure the length by hand span or foot span. Every people will get different results. So then there is a need to define the standard unit, because every people having a different hand span as well as the foot span. Okay, if you will measure, so you will get the different results. So they come to the conclusion, so they have to define one unit that is called as a standard unit. Okay, so the next one is standard unit. For example, length को measure करने के लिए, for measuring length, what are the standard unit? Meter, centimeter, and foot. For measuring weight, kilogram, gram और pound, ठीक है. Now the next thing which will come into our mind, how to express the measurement of any physical quantity. मान लो आपने एक स्टिक की लेंथ को मेजर किया. फॉर एग्जाम्पल, you have measured one stick whose length I have mentioned as 1.2. Okay, so 1.2, it may be 1.2 meter, it may be 1.2 centimeter, it may be 1.2 किलोमीटर. इसका मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए उसका एक मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट को स्पेसिफाई करना जरूरी है. तो फिजिकल क्वांटिटी to express the physical quantity, there is a need to define its magnitude, which I am denoting with, let us suppose, n, and unit will be q. So this is nothing but magnitude, and this is the unit. Okay, so what you have understood, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट को स्पेसिफाई करना नेसेसरी है. नाउ write one note point. If we measure a physical quantity, if we measure a physical quantity is more than one unit, then the multiplication of magnitude and unit is constant.
यदि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं एक से ज्यादा यूनिट में, तो उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन दोनों यूनिट में इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, this is the physical quantity you have measured. Let us suppose in the first and second unit, this is the in terms of first unit, this is in the second unit, n1 u1, it should be equal to n2 u2. Second point is very important. If everyone uses a unit of their choice for every measurement, for every measurement, then it is very difficult to come to the conclusion. For example, acceleration is nothing but velocity and time. Okay. So if three persons are there, let us suppose they are measuring the velocity मीटर पर सेकेंड, दूसरा सेंटीमीटर पर सेकेंड में मेजर कर रहा है, तीसरा फीट पर सेकेंड में मेजर कर रहा है, और डिवाइडेड बाय टाइम कैन बी इन आवर, मिनट एंड सेकेंड. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम टू द करेक्ट कंक्लूजन. तो यूनिवर्सली जो कि एक्सेप्टेबल है, एक यूनिट को डिफाइन करना बहुत जरूरी था. सो देयर इज अ नीड टू डेवलप और universally accepted system, universally accepted system, universally accepted system. So which is nothing but the system of unit. So that's why the next term which is introduced as a system of units, system of unit, complete set of units. It is a complete set of unit which is used to measure all kind of fundamental and derived quantities. So the system of unit is classified into three categories. The first one is MKS system. Second one is the CGS, and third one will be the FPS. I will tell you what is this MKS, CGS and FPS. MKS, CGS and FPS. Meter, kilogram and second. ये क्या है? बेसिक यूनिट है लेंथ, मास और टाइम की. बेसिक यूनिट है ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम. सीजीएस में ये सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर. दिस वन विल बी ग्राम एंड दिस इज सेकेंड. और तीसरा जो है एफपीएस, which is nothing but foot, pound and second. Okay. Now the next thing is defined, which is called as a SI system of unit. Okay. Why there is a need of SI system of unit? First of all, try to understand, because whatever the earlier different system of unit we are using, that is MKS, CGS and FPS, they are using in the different countries. Okay. So there is a need for internationally accepted system of unit.
तो तुमको एक डिफाइन करना बहुत जरूरी था, ऐसी यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो, जिसको बोलते हैं एसआई यूनिट। सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर यूजिंग दिस एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, it is internationally acceptable system of unit. Internationally acceptable system of unit. Internationally acceptable system of unit.